Now today let's start with chapter number 4, political features of India. In this chapter I will tell you about some political features, like we have many neighboring countries of India, then we have some political division, we have central government, state government. I will tell you everything in this chapter, so let's start now. Now, we have already studied that we have 7 continents. Everyone knows the 7 continents. We have Asia, Africa, South America, North America, Australia, Antarctica, and your EU, right? These are the 7 continents. And India is separated from most of the Asia by the Himalaya, which forms a natural boundary. Himalaya क्या form करता है? Natural boundary. Let's study about the neighboring country. India की neighboring countries Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and your Myanmar. ठीक है, these are the neighboring countries of India. So, let's study about the neighboring country, Pakistan and Afghanistan. I have shown you पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, राइट. इफ वी टॉक अबाउट भूटान, नेपाल एंड चाइना, दे आर लोकेटेड इन नॉर्थ. इफ वी टॉक अबाउट श्रीलंका एंड मालदीव्स, वेयर दे आर लोकेटेड इन द साउथ. बांग्लादेश एंड म्यांमार इन ईस्ट. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, it is the largest democracy in the world. Let's study the political division. Our country India is divided into different states and capitals and UT also. So, India is a large country in terms of both area and population. We have union or central government, where at New Delhi, right? And every states have their own state government. Then we have the president, who is the first citizen of the country. He is the head of the country. वो country के head होते हैं. Prime Minister and his council of minister at the central government look after the welfare. ये किसको देखते हैं? Welfare को, right? The president, vice president, prime minister, their ministers and officers of the central government, where do they all work? जितने भी officers होते हैं हमारे central government के, वो कहाँ काम करते हैं? New Delhi में. Then the central government alone cannot look after law and order in each other country. So India has been divided into smaller area. और इंडिया को हमने क्या करा? छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ दिया. जम्मू कश्मीर, और उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हमने क्या करा? इनको डिफरेंट स्टेट्स में तोड़ दिया. नाउ फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन. पीपल वोट फॉर देयर पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन, और जो विनिंग पार्टी होती है, व्हाट दे डू? दे फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द मोस्ट सीनियर मेंबर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, एंड देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. ये सब किसके अंदर आते हैं? सेक्रेटरीज के अंदर. द प्राइम मिनिस्टर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग इन चार्ज एंड अपॉइंटिंग अदर मेंबर. देखो, प्राइम मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप गवर्नमेंट में डिफरेंट मेंबर्स को चार्ज दो और अपॉइंट करो. सो दिस इज योर राष्ट्रपति भवन. ठीक है, ऐसा है हमारा राष्ट्रपति भवन, आप देख सकते हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट. इंडिया क्या है? बिग कंट्री है. इट हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनिट. इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरस्टूड एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स of the states and union. So what happened? Each states of India has its own government. अब सब state को अपनी अपनी government दे दी गई. So for that they can look after the direct issues of the state, and it will become easier for the government to run the states. Each states अपने हैं. We have chief minister, governor, minister of states, and they live in respective state. अपने अपने states में रहते हैं, अपने states का welfare करते हैं. Now, capital of India is Delhi. Smallest states कौन सी हमारी? गोवा. और largest आपकी राजस्थान. This you should know. Here it is written New Delhi, Goa and Rajasthan. Now India states and their capital. Let's study about India. We have Andhra Pradesh, that is Hyderabad. Then we have Arunachal Pradesh, Itanagar, Assam, Dispur, Bihar, Patna. Right? Then we have Chhattisgarh, Raipur, Goa, Panaji.
Then we have Gujarat, Gandhinagar, and then Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Shimla. Then we have Jharkhand, Ranchi, and Karnataka, Bangalore, Kerala, Thiruvananthapuram, Madhya Pradesh, Bhopal, Maharashtra is your Mumbai, Manipur, Imphal, Meghalaya, Shillong, Mizoram, Aizawl. Then we have Nagaland, Kohima, Odisha, Bhubaneswar, Punjab is your Chandigarh, Rajasthan is your Jaipur, Sikkim, Gangtok, Tamil Nadu, Chennai. And Telangana, it's a new state which is carved out from the your Andhra Pradesh. So it is Hyderabad, Tripura is your Agartala, Uttar Pradesh, Lucknow, Uttarakhand is your Dehradun. And then we have West Bengal, that is Kolkata. आपको ये learn करनी है, right? So then we had in Union Territories, we have 28 UTs. You can see over here Andaman and Nicobar. Capital is Port Blair. Chandigarh, that is Chandigarh. Then we have Dadar and Nagar Haveli, Silvassa, Daman. इसकी capital है. Ladakh, that is Leh. Lakshadweep, that is your Kavaratti, Delhi, New Delhi. Pondicherry, Jammu and Kashmir की क्या आपकी श्रीनगर. नाउ इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, राइट. This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.